तो गाइस हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए हमें दे रखा है 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप, बी हमें दे रखा है 4i कैप प्लस 3 माइनस लेमडा 2 जे कैप प्लस 6k कैप, और सी हमें दे रखा है 3i कैप 6j कैप लेमडा 3 माइनस 1k कैप। थ्री वेक्टर्स हैं जिसमें हमारा जो बी वेक्टर है वो 2a वेक्टर के बराबर है, और हमें बोला गया है कि जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, और हमको बोला गया पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 हमारे पास क्या क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि जो हमारा बी वेक्टर है वो बराबर है 2a वेक्टर के। वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर हमारा क्या है, वो हमारे पास है 4i कैप 3 माइनस लेमडा 2 जे कैप प्लस 6k कैप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास बराबर किसके, 2, यहाँ पे 2i कैप लेमडा 1 जे कैप प्लस 3k कैप। सो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4i कैप प्लस यहाँ पे 3 माइनस लेमडा 2 जे कैप प्लस 6k कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 4i कैप प्लस यहाँ हो जाएगा 2 लेमडा 1 जे कैप प्लस यहाँ 6k कैप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी सारे वेरिएबल्स तो बराबर हैं, केवल हमको इन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 लेमडा 1 इक्वल टू 3 माइनस लेमडा 2। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये आ गई। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमको बोला गया है कि A इज परपेंडिकुलर टू C। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी A वेक्टर डॉट C वेक्टर की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे हम A वेक्टर लिख देते हैं। A वेक्टर हमारा क्या है, A वेक्टर हमारा है 2i कैप प्लस लेमडा 1 जे कैप प्लस हमारे पास क्या है 3k कैप। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं सी वेक्टर से। सी वेक्टर हमारा क्या है, सी वेक्टर हमारा है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस लेमडा 3 माइनस 1k कैप। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेमडा इंटू 6 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू लेमडा 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस यहाँ 6 लेमडा प्लस यहाँ 6 लेमडा 1 यहाँ 3 लेमडा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया 6 लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 का फैक्टर सबसे रिड्यूस कर दें तो वो हो जाएगा 2 लेमडा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा लेमडा 3 प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गई एक और इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 2 लेमडा 1 इक्वल टू 3 माइनस लेमडा 2। तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं, 2 लेमडा 1 इक्वल टू 3 माइनस लेमडा 2। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप पहले तो हम इक्वेशन 2 को भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई 2 लेमडा 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी लेमडा 3 माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। तो ये तो हमारी है इक्वेशन 2, हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 1, 3, 1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1, 3, 1। तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। तो यहाँ पे लेमडा 1 इसको इक्वेशन 1 में डालते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेमडा 1 क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 3 माइनस लेमडा 2। लेमडा 2 हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा 2 हो जाएगा बराबर 3k। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन हो जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, -1/2 4, 0, -1/2 4, 0। इक्वेशन 1 में डालें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू -1/2
और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस लेमडा टू की जगह क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा बराबर -1 के। इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी चेक करें तो वो क्या है 2 लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 3 -1। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ लेमडा 3 क्या है वो हमारे पास है 0 -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू -1। तो ऑप्शन 2 हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या है 1,5,1, उसको भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे जो कि हमारे पास है 2 लेमडा 1 इक्वल टू 3 माइनस लेमडा 2 और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारा है 1,5,1। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 इंटू लेमडा 1, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 1 और पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है वो हमारे पास है 3 माइनस लेमडा 2, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 4, -2, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। 1/2 4, -2, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3 माइनस लेमडा 2, तो वो हमारे पास है 3 माइनस 4। तो ये यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू -1 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया वो हमारा हो गया आंसर ऑप्शन बी -1/2 4, 0। ये हमारा करेक्ट पॉइंट हो गया। होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Here the question is let A vector is equal to 2 I cap plus j cap plus k cap and B vector here is I cap plus 2 j cap minus k cap, and here is a vector which is C, we coplanar with these two vector, right? And here is C vector, it is perpendicular to A vector, right? Then C vector is option A 1/2 minus j cap plus k cap, option B 1/√3 minus I cap minus j cap minus k cap, and here is option C which is 1/√5 minus k cap minus 2 j cap, and here is option D 1/3 I cap minus j cap, here is minus k cap, right? So here is given that the C vector is unit vector, so we can say that magnitude of C vector it comes out 1, right? And it is given that this vector and this vector are coplanar, right? So here is C vector is coplanar with these two vectors, so this C vector we can write as lambda times of A vector plus mu times of V vector, right? And for a better understanding, here we are going to write also, here in place of lambda we can write as, x and y, right? Here is x and here is y, right? So C vector is a multiple of x A vector and y V vector, right? So here is given that the x A vector is given that 2i cap plus j cap plus k cap, right? Plus y times of V vector which is here given that I cap plus 2j cap minus k cap, right? So if you solve this, then you will get C vector here, it is equal to 2x from here and here is y, 2x plus y I cap plus here it comes out x from here and here is you will get 2y from this, right? Here is j cap plus x minus y k cap, right? It is our C vector, right? So here is given that also one thing which is C vector is perpendicular to A vector, right? We know that two vector are perpendicular, it means their dot product should be equal to 0, right? So here is if you take dot product this vector to A vector which is this, right? So then you will get 0. So as we know that the summation of I dot I it gives you 1, but summation of I dot j it gives you 0, right? So as in these two property, if we will take the dot product with these two vectors, so becomes 2 times of this vector which is 2x plus y, right? Because here is coefficient of I is 2, so if you multiply with this vector then you will get 2 times of this thing, and this coefficient of j and k is 1. So basically this is multiplied by 1 times of this vector which is x plus 2y, coefficient of j cap, right? Here is plus 1 times of this coefficient which is x minus y, it comes out 0, because we know that vector A dot c it is equal to 0 because both vectors are perpendicular to each other, right? So if you further solve this, then you will get here you will get y
is equal to minus 2x, right? So if you solve this, then you will get this. If you solve this question, then you will get this here, right? So it means C vector, it is equal to minus 3x I cap plus 3x j cap, right? Here is not I cap, here is j cap, because here is I cap becomes 0, because if you put y in place of this thing, if you put here is y, then you will get here 0 here, and here is you are left with only minus 3x, and here is it's become 3x, right? So basically C vector is this, right? But here is x is variable, so no, now we will find the value of x, right? So it is given another thing, which is modulus of C vector is equal to 1, because C vector is unit vector. So we can say that the model, if you find the modulus of this thing, so it comes out coefficient of I, which is 0, so 0 square, plus coefficient of j cap, which is 3x minus 3x, so it is minus 3x whole square, plus coefficient of k cap, which is here 3x, right? So it is 3x square, right? So this is our modulus of, it is equal to 1 here, right? So if you solve these, then you will get here 1 is equal to 9x square plus 9x square from here also, right? In the under root. So if you squaring both side, then you will get here 1 is equal to 18x square, or we can say that x is equal to plus minus 1 by 3 root 2. 3 root 2. Three root 2. 3 root 2, right? Here is 3 root 2. So finally you will get the vector C, which is comes out 1 by root 2, 1 by root 2, here is minus a plus k cap. Plus k cap, right? So this is our final answer of this question, right? So this is our answer. So if you see in the options, so option A will be correct, right? So this is our final answer. Thank you. Hello students, today our question is the position vector of three vertices ABC of a tetrahedron ABCD are I plus J plus K, K, I and 3I respectively, and the altitude from vertex D to the opposite face ABC made the median line through A of the triangle ABC at the point T. If the length of the side of AD is 4, then the volume of tetrahedron is 2 under root 2 divided by 3. Find the position vector of the point T for all possible positions. So the solution of this question is, we have given that AD is equals to 4. This is given to us, and volume of tetrahedron is given us. So V equals to 2 under root 2 divided by 3. So volume of tetrahedron is equals to, we can write here, volume of tetrahedron is 1 by 3 into area of triangle ABC and P. P is the median line drawn through E to ABC. So this is equals to 2 under root 2. This is equals to 2 under root 2 divided by 3. From here we get half of area of triangle ABC is in vector form, half of AB vector into BC vector, and into T, this is equals to 2 under root 2, as 3 and 3 will be cancel out here. So we can write here AB vector, the value of AB vector is given to us J plus K cap into 2I cap, and P is equals to 2 under root 2. So from here we get 2 and 2 will be cancel out. So we get here mod of J cap plus K cap into I cap into P is equals to 2 under root 2. So now from here we can write
j minus k, we can write here by multiplying I, we get here j minus k into mod of p is equals to 2 under root 2, and from here we get p is equals to 2 minus root 2. As we have the value j and k as 1 1 1 and here is 3i, so we get 1 by solving this. This is here 1, so we get p is equals to 2 under root 2. Now under root 2p is here is under root 2p is equals to 2 under root p, so we get p is equals to 2 here. We have to find the position vector of point p, point E. We have to find the position vector, so we can write here position vector of point E, let it divide AF in the, it divide median, that is given to us AF in lambda ratio 1. So we can write position vector of E as lambda into 2i plus I plus j plus k, and these are in cap, or all are in cap. I cap here is I cap, here is j cap, here is k cap, and this is divided by lambda divided by, here is section formula, and m and ratio m into x1 plus y into y1 and divided by m and n. So this is here section formula applies. So this is our equation 1, m and n section formula here. So from this we can write here AE vector is equals to position vector of E minus position vector of A. Here is PV is stands for position vector. Now from here we can write this is equals to lambda I minus j minus k divided by lambda plus 1. So we get here mod of AB is equals to 3 time of lambda divided 1 1 1, we get here 3 divided by lambda plus 1, and this is in square here. So from here we get 4. This is our equation second. So from here we get 4 plus 3 lambda divided by lambda plus 1 whole square is equals to 16. So we can write here lambda divided by lambda plus 1 is equals to plus minus 2. So from here we get lambda is equals to minus 2, or lambda is equals to minus 2 by 3. So putting this value in the equation 1, we get in equation 1 we get here possible vector of possible position of E is as minus I plus 3j cap plus 3k cap, and or we get here 3i minus j minus k cap. So this is our answer. Thank you. Hello everyone, in this question we have let vector A as 2i cap plus k cap, vector B as I cap plus j cap plus k cap, and vector C as 4i cap minus 3j cap plus 7k cap. Now we need to determine vector R satisfying R cross B equals to C cross B and R dot A equals to 0, right? So first of all, let vector R as xi cap plus yj cap and plus zk cap, right? Now in the question we have vector R dot A equals to 0. Now if I dot it with A, we'll get 2x plus z equals to 0, or you can say the value of z is minus 2x. Now this is my equation 1. Now R cross B is equals to C cross B,
right? Now if I compare it here, then we need to first find R cross B. Now for finding R cross B, we have to make our determinant like this. And what is R? We have first I, J, K component. The component of I, J, K of vector R is X, Y, Z, and for vector B is what? 1, 1, 1, right? Now if I solve this, I'll get R cross B vector as I cap into Y minus Z minus J cap into X minus Z and plus K cap into X minus Y, right? Now if I solve C cross B, then again we have determinant with ijk. Now here the component of vector C is what? The component of vector C is 4, minus 3 and 7. 4, minus 3 and 7, and for B is 1, 1, 1, right? For B is what? 1, 1, 1. Now if I solve it, I'll get C cross B as I cap minus 3 and minus 7, that is minus 10, minus J cap, and we have 4 minus 7 minus 3, and plus K cap, we have 4 plus 3 7. So I can say Y minus Z I cap minus X minus Z J cap plus X minus Y K cap must be equal to minus 10 I cap plus 3 J cap plus 7 K cap, right? Now if I compare it, I'll get Y minus Z as minus 10, X minus Z as plus 3, and X minus Y as plus 7, right? Now we have our first equation as Z equals to minus 2x. Now from here I can put Z equals to minus 2x, that is plus 2x equals to 3, and we can say the value of X is 1. Now if value of X is 1, then I can say value of Z is minus 2. Value of Z is minus 2. Now if value of Z is minus 2, then I can say Y plus 2 equals to minus 10, and the value of Y is minus 12. So we can say our R vector is I cap minus 12 J cap minus 2 K cap, and this is the answer we need to find. Thank you.